सर। गुड राम मॉर्निंग। राम सर, राम राम। राम राम, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा सबको। जय श्री तो कृष्णा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर कैसे है सर? यस कनिष्क, क्या बोले? सर 5 मिनट दे दोगे? हाँ, वही मैं पूछ रहा था। सर वही अभी पूछ रहा था। सर अभी आपकी छुट्टी सर 1 मिनट 2 मिनट पहले 5-10 मिनट दे दीजिए कितना मिनट पहले छूटा है, सही से बताओ। सर 27 सर। पे जस्ट 2 मिनट पहले है। 27 पे छूटी सर। 27 पे छूटा है सर। ओके, ठीक है। वी मीट आफ्टर 15 मिनट्स। थैंक यू सर। थैंक Thank यू you, सर, sir. यू आर ग्रेट सर। 11:45 पे हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है? टेक अ थैंक यू ब्रेक। सर। ओके सर, Thank you, sir. थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम।
Yes, is everyone back here? आ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good. 1 घंटे की क्लास के बाद थोड़ा ब्रेक तो मिलना चाहिए आपको. No issues. So, are we good to continue now? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. So yesterday we had talked about damping. One-liner definition of damping. It is the process of eliminating the elliptical oscillations of a north-seeking gyro compass so that the amplitude of the oscillations keep on reducing every cycle and it finally settles down pointing to north with zero oscillations or negligible oscillation. इतना हिल रहा है कि पता भी नहीं चल रहा. How many types of damping? Sir, two Divya? types. Two types. What are they? Keshav, go ahead. No problem. Sir, damping by tilt and damping by azimuth. By नहीं हम use करेंगे. We will use the term damping in tilt and damping in azimuth. ठीक है? Okay. Yes, sir. So damping in tilt is damping or precession towards the horizon. अगर ऊपर जा रहा है तो उसको वापस नीचे horizon की तरफ लाए. अगर नीचे जा रहा है तो उसको वापस ऊपर की तरफ लाए. So we always wanted to have the horizontal with us. So horizon के तरफ precess करने के process को damping and tilt बोलते हैं. और मेरिडियन के तरफ प्रेसेस करने को के प्रोसेस को डैम्पिंग इन अजीमथ बोलते हैं. अगर दूर जा रहा है, मेरिडियन से दूर जा रहा है तो उसको वापस लेके जाओ. अगर इधर को जा रहा है तो इधर से वापस लाओ. सो दैट इज डैम्पिंग इन अजीमथ. डेफिनेशन क्या होगी? सिंस आई वांट प्रेसेशन, डैम्पिंग इन टिल्ट की बात कर रहे हैं. अगर वी वांट प्रेसेशन इन दिस प्लेन, if we want precession in vertical plane, we have to apply a torque. Torque will be applied in which plane then? अगर ये precession चाहिए, horizontal. horizontal torque लगाएंगे तो यो प्रेसेस करेगा. ऐसे प्रेसेस करेगा कि ये ऑपोजिट ऑफ टिल्टिंग हो. टिल्टिंग ऊपर को जा रही है तो जो हमने horizontal torque लगाया, एडेड टॉर्क लगाया, वो उसको वापस नीचे की तरफ ले जाएगा. अगर नीचे की तरफ जा रही है तो उसको वापस horizon की तरफ लेके आएगा. So damping and tilt is the application of a torque in the horizontal plane which results in precession in the vertical plane which is opposite to the tilting. कैसे करते हैं ये? अभी देखेंगे कैसे करते हैं. Another one, the next one is damping in azimuth. So we want precession in this manner, in the horizontal plane. Then how should I apply the torque? Sir, vertical. Very good, vertical torque. So vertical torque लगाएंगे. So damping in azimuth is application of a vertical torque on the spin axis, which results in the precession of the spin axis in horizontal plane, which is what was happening with control torque also. Correct? Vertical torque लगाते थे, अगर ईस्ट में जा रहा है तो वापस वेस्ट की तरफ लेके आता था. That was same. So damping in azimuth is something similar to the control precession, but is damping in opposite to the control precession or out of phase जिसको बोलते हैं. What is out of phase? एक ऊपर को जा रहा है तो दूसरा नीचे को आएगा. अगर कोई ईस्ट को जा रहा है तो वो वेस्ट को जाएगा. अगर वेस्ट को जा रहा है तो ईस्ट को आएगा.
So ulta is out of phase. So damping in azimuth is similar to control precession, only it is out of phase. Now we are faced with a situation, how to do it? We'll go to the board for this. Before that, let me explain this to you. कहाँ गया? Now you already know that there are liquid pots aligned with the spin axis. Spin axis के along. ये spin axis है तो एक pot यहाँ एक pot नीचे लगी हुई है. So it is aligned like this. The reservoirs in which there is mercury liquid, which is taking care of control precession. When there is tilting, the liquid will get full shift from this side to the lower side to maintain the level, and control torque will be applied. Why we had done this? Because we did not want a solid weight on top. Solid weight का limitation था. What was the limitation of the solid weight? Rolling Sir, rolling error. during rolling it Very, does not work. very good. So we had removed the solid weight and we had placed the reservoirs. Now for damping, what we do, we again place a weight here on top on the rotor casing. Again we are going to place a weight here. बहुत छोटा सा weight होता है, something like 17 gram. But इसकी लोकेशन सेंटर में नहीं होती. इसकी लोकेशन सेंटर में नहीं होता, ये ऑफ सेंटर होता है. अगर ये नॉर्थ है तो दिस साइड इज व्हाट, वेस्ट और ईस्ट. व्हाट यू आर लुकिंग एट? East, west. वेस्ट. ओके, तो उल्टे हमारी तरफ से आप देख रहे हैं. सो द वेट इज नॉट प्लेस्ड so that it is passing through the center of the spin axis. It is placed offset at this place. It is not in the center but offset little to the west. In the line of the rotor, yes, but offset to the west. So the weight that we have here, the weight that we have here is not through the center. ये अगर spin axis है यहाँ पे center में, spin axis पे दिखाऊं तो वो समझ में आ जाएगा. ये spin axis है, so it is not placed here in the center, which was earlier the case. Control precession के लिए हमने यहाँ पे लगाया था. The weight was passing through this, but this time it is offset to this side. In line, yes, of the rotor. Rotor ऐसे घूम रहा है, तो rotor से तो aligned है, but अगर side में देखें तो it is not in the center. अगर ऊपर से देखें तो it is not in the center, little to this side. Now what happens? Because of the weight, there will be a torque created on this side or not? यस सर. सर ये वेट इधर आएगा, ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा ना? नहीं, वो हम वेट वहां पे रखते ही है. यस सर. वो ऑफसेट करके लगाते ही है, मूव हो जाएगा नहीं. हमने वहां पे फिक्स किया. फैक्ट्री में जब बना रहे थे कंपास, तो उस समय हमने वहां पे उसको टाइट किया, वहां पे वेट रखा है. यस सर. What will be the result? If it is placed here on the side, is it going to tilt the whole thing? इसे ये पूरे सिस्टम को क्या घुमा सकता है? ये रिजिड है ना? Yes sir. अगर इधर में होता तो ऐसे घूमता, अगर इधर होता तो ऐसे घूमता. बट अगर ये इस स्पिन एक्सिस से थोड़ा वेस्ट में है तो क्या इसको घुमा पाएगा? इसको यूं घुमा पाएगा जब नीचे फ्लोर पे लगी हुई है? No sir. नो सर. So this offset weight is acting downwards
which is having horizontal component all the way, but since it is rigid, it does not produce any effect. It is not producing any effect because this is rigidly fixed on the floor. But what happens when there is tilting happening? Tilting hoga. When there is rotation of the earth, there will be drifting, there will be tilting. Tilting के साथ control precession लगना शुरू होगा. Liquid shift, correct? Yes. Yes. Yes, sir. Because of the tilting, हमने इसको घुमा के रख दिया. Of course नॉर्थ साउथ में पॉट लगी हुई है. जब ये टिल्टिंग होगी तो पॉट ऊपर जाएगा, लिक्विड इधर से इधर को आएगी, साउथ एंड पे टॉर्क लगेगी, प्रिसेशन होगा. नॉर्मल जो अभी तक हम बात कर रहे थे. Yes, sir. But now there is weight also. There is this weight as well here. How do I show you that? Let me pick up on some. board. This one. So think that the weight is offset here. इस चश्मा को हम मान ले कि ये weight जो है वो offset होकर के लगी हुई है या नहीं? Yes, sir. So when it is horizontal like this, the spin axis is horizontal like this. Rotor यहाँ पे घूम रहा है ऐसे. When it is like this, the vertical weight is not tilting it or not producing any torque. Producing torque, but since it is rigid, उसका फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब ये tilting होगी, spin axis tilting होगी तो ऊपर जाएगा. Correct? Yes, sir. So when it is tilted, what is happening to the weight? सर Is पीछे it चला also- जाएगा. Sir, पीछे Is जाए. it also going in a horizontal direction? Yes, sir. When it is tilting down, is it also going forward? Down. Yes, sir. Yes, sir. Yes. That means जब ये वाली मोशन होगी हॉरिजॉन्टल तो स्पिन एक्सिस को यूं घुमाने को देखेगा या नहीं? हाँ सर. या इधर को जाएगी तो ये स्पिन एक्सिस को इधर घुमाने की कोशिश करेगा या नहीं? हाँ सर. तो टॉर्क लग गई स्पिन एक्सिस पे. इस प्लेन पे लगी है टॉर्क. स्पिन एक्सिस को किधर घुमाने की कोशिश हो रही है इससे? वर्टिकल पे लगेगी सर. सोचो फिर से. Horizontal. सर हाँ अगर Horizontal. spin axis यूं पर- जाएगा तो यूं घुमाएगा ना, तो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ना. हाँ सर. और ऊपर को जाएगा तो इधर को क्या, तो स्पिन एक्सिस को इधर को घुमाने की कोशिश करेगा ना. Yes, sir. That means this is having only a vertical component when horizontal, but when there is tilting, there is a tipping effect on this. ये टिप करता है एक साइड को और उस चक्कर में स्पिन एक्सिस को horizontal torque produce करता है. The horizontal movement, when it is going down like this, let us say it is at this point. Remember, aligned with my eyes here. When it is tilted, it is going down. So मेरी आंख से इतना नीचे आ गया vertical, Yes, sir. and it is also coming to this side. इस point से यहाँ पे आया है. Vertical भी थोड़ा move किया है. Vertical भी move किया और horizontal भी move किया. दो component लग गए. Yes, sir. So vertical component से तो कुछ हो नहीं रहा था, इसको पलटी नहीं कर पा रहा था. But horizontal component will try to apply a torque in the horizontal direction, which results in the precession in Vertical. 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 vertical Vertical plane. direction. And this vertical direction, vertical plane में जो movement होगी, this will be opposite to, Tilt. and that's how damping and tilt is applied. Just by placing a small weight, little offset on the west of the center.
west of the center of the axis. This is producing another fourth kind of torque. एक तो tilting हो रही थी, earth rotation, drifting हो रही थी, वो भी earth rotation के चलते। जब tilting हो रही थी तो liquid flow होकर के control torque लग गया और उसके चलते control precession हो गई। Control precession मतलब PC, correct? Oscillation. Yes, sir. Yes, sir. Now, this damping weight is producing another damping torque, Yes. and Yes, because sir. of this, there is damping precession. Yes. Yes, sir. PD. Now there are four forces acting on this. The spin axis is having four forces acting on it. There is tilting, drifting, control precession, and damping precession. Drifting was taking it eastward. In north hemisphere we are talking about. The drifting was taking it easterly. Control precession was taking it westerly. Tilting is taking it up. Damping precession is taking it Down. down. So now four forces all trying to neutralize each other. एक इधर को खींचता है, एक इधर को खींचता है, एक ऊपर को खींचता है, एक नीचे को खींचता है। स्पिन एक्सिस क्या करेगा? जहां चारों बराबर हो जाएंगे, Align itself Align to the हो- north. जब इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस आएंगे तो वो टिक जाएगा एक जगह। Yes, sir. इधर का ड्रिफ्टिंग, इधर का कंट्रोल प्रिसेशन, इधर का टिल्टिंग, इधर का डैम्पिंग प्रिसेशन, जिस जगह आकर के वो टिक जाएंगे वहां पे सेटल हो जाएगा। Yes, sir. Okay, sir. And lo, you have a gyro compass which is now pointing to north, stable condition. You can use it for heading finder. Congratulations, you have just made a gyro compass. Thank you, sir. Thank you, sir. So, two types of damping, damping and tilt, damping and azimuth. How damping and tilt is done? By placing a small weight on top of the rotor casing, little offset to the west. When the spin axis is horizontal, this weight is acting vertically downward, only producing a vertical torque. But since the system is rigid, it does not tip over the assembly. But when the tilting takes place, this weight has got a tipping effect, thereby producing a horizontal component also, which tries to move the spin axis in horizontal plane and results in precession in the vertical plane, which is opposite to the tilting. Yes, sir. Okay. Damping in azimuth. What do we have to do there? We want precession in the horizontal plane. So what do? Vertical torque. You have to apply torque Vertical. vertically. The vertical torque was also applied by the liquid flow. Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड पे चल रहे हैं, बोर्ड पे जाते हैं एक मिनट। Okay, sir. कहाँ गया था? All right, so we had this torque being applied when the liquid was shifting from one reservoir to the other reservoir.
when the liquid was full here, अभी शिफ्टिंग नहीं हुई, टिल्ट के चलते ये लेवल्स ऊपर चले जाएंगे. Only when we have this, तब लिक्विड जाना शुरू होगा. करेक्ट है? Okay, now the liquid should flow. The center of gravity is still here, right? When the weights are equal on both the side, इधर का weight equal है, तो center of gravity will be in the center. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, right sir. now it is not providing any torque. When we open this, then slowly the liquid starts to flow in this direction, और इसका लेवल बढ़ने लगता है और इसका लेवल कम होने लगता है. अब टॉर्क लगेगी. What we are trying to suggest here, that if it was tightened here, अगर बोल्ट हम यहाँ लगा देते, कोई स्क्रू लगा देते और इसका बोर टाइट कर देते, तो ये कंडीशन बनी रहती या नहीं? यस सर, बना Yes, sir. और टॉर्क नहीं लगता. नहीं लगता. यस No. जब हम इसको खोलेंगे तो बहना शुरू होगा, Yes, sir. टॉर्क लगना शुरू होगा. अगर इसको Yes, हम yes. ट्यूब बड़ा कर दें तो जल्दी जल्दी फ्लो होएगा, यस सर. टॉर्क जल्दी लगेगा. अगर बड़ा कर दिया तो, हाँ सर. अगर कम कर दिया तो टॉर्क लगना धीरे हो जाता है. Yes. Yes, sir. अगर इसको और पतला कर दिए तो और धीरे धीरे टॉर्क लगेगा. यस सर. हाँ सर. Yes. अगर बंद कर दिए तो टॉर्क लगना ही बंद हो जाएगा. बंद हो जाएगा. यस हाँ सर. सर. Yes, sir. दैट मीन्स जो यहाँ पे टॉर्क क्रिएट हो रही है, इसको हम इससे कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं? हाँ सर. Yes, sir. मतलब उधर से टॉर्क जो आ रही है, उधर से जो लिक्विड आ रहा है, उसको हम रोक रहे हैं, तो एक ऑपोजिट फोर्स लगा दे रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. इसको Yes, जब sir. हम बंद कर Yes, देंगे sir. यहाँ पे, तो इसका ऑपोजिट फोर्स लग गया कि नहीं? और ये दोनों बराबर हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर आ जाती है, टॉर्क लगता ही नहीं. धीरे धीरे खोलते हैं तो ये थोड़ा कमजोर पड़ता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे इधर वेट बढ़ना शुरू होता है. ज्यादा खोलेंगे तो जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू होता है, ये और कम होना शुरू होता है. तो दिस इज द डैम्पिंग इन एजिमथ. ये वर्टिकल टॉर्क ऑपोजिट लग रहा है या नहीं? इसके ऑपोजिट यहां से कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं इसको हम? Yes, sir. कितना टॉर्क लगेगा उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं इस बोर से. हाँ सर. तो ये अपोजिंग फोर्स हो गया, डैम्पिंग फोर्स हो गया या नहीं? हाँ सर. दिस इज व्हाट इज इट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टॉर्क वी आर क्रिएटिंग अगेंस्ट इट? सर इसके लिए तो हम इसमें वेट क्या प्लेस किया इसमें? वन एट अ टाइम प्लीज. सर एक बार रिपीट करिएगा. व्हाट वी आर सेइंग कि टॉर्क जो ये लग रही थी लिक्विड फ्लो के चलते, दैट वाज इन विच प्लेन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कैसा फोर्स लग रहा था? सर वर्टिकल. वर्टिकल. जब हम इसको यहाँ पे नैरो कर रहे हैं, ट्यूब को नैरो कर रहे हैं, तो इसके टॉर्क के ऑपोजिट में एक फोर्स लगा रहे हैं ना, तभी तो ये धीरे हो रहा है. Yes, sir. Yes. जैसे हम दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद हो रहा है, तो लिक्विड उसको वापस आने से रोकता है ना, हाइड्रोलिक वाला डोर. हाँ सर. Yes, sir. अगर टाइट कर देते हैं तो वहीं रुक जाता है. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा खोलते हैं स्क्रू तो आना शुरू होता है, ज्यादा खोल देते हैं तो तेजी से आता है. Yes, sir. सेम अरेंजमेंट है. लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर. हमने थोड़ा सा टाइट कर दिया तो धीरे धीरे जाएगी, तो जो चेंज हो रहा था वो धीरे धीरे टॉर्क लगेगी. अगर उसको ज्यादा खोल दिया तो जल्दी से लग जाएगा टॉर्क. तो हम कंट्रोल प्रिसिशन जो लग रही है उसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. मतलब Yes, सर sir. वो नैरो करने पे ही वो डिपेंड हो रहा है ना सर. कैसे पे डिपेंड होता है?
सर वो नैरो, जब तक हम नैरो करते रहेंगे तो ही तो टॉर्क इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। एग्जैक्टली, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं कि हाउ मच ऑफ डैम्पिंग प्रिसिशन हैज टू बी अप्लाइड, वी कैन जस्ट कंट्रोल इट बाय द bore of the tube, that's all. Damping in azimuth is done by controlling the bore of the connecting tube, that's all. क्योंकि जब हम टाइट करते हैं तो उसका टॉर्क कैसे लगेगा उसको कंट्रोल करते हैं। ज्यादा खोला जल्दी टॉर्क लगेगा, कम खोला टाइट कर दिया तो धीरे धीरे लगेगा। उसको ऑपोजिट फोर्स, लिक्विड जो आ रहा है उसको अपोज कर रहे हैं ना हम, नैरो बोर से, बस हो गया। वैसे ही करते हैं जैसे हाइड्रोलिक डोर में होता है, वैसे ही जस्ट बाय चेंजिंग द बोर। ये हम आप नहीं करते, ये सब कुछ होता है फैक्ट्री में, लैब में होता है। हमको एज ए यूजर हम लोग को कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम में लिखना है, समझ में आने चाहिए कि हम क्या कर। सो डैम्पिंग इन सर एजिमथ, ये तो डैम्पिंग इन अजीमथ हो गया ना सर, ये तो वर्टिकल लग रहा है। यस दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी हमने डैम्पिंग इन टिल्ट लगाया था ना, डैम्पिंग इन टिल्ट कैसे किया था? हाँ सर। हॉरिजॉन्टल। Straight offset to the west of the axis. So this was damping and tilt. इसके चलते horizontal torque लग रही थी या नहीं? हाँ यस सर। तो प्रिसेशन यूं हो रहा था। यस सर। जब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो टॉर्क यू लग रहा है, वर्टिकल में लग रहा है ना, यस और उसको हम अपोज कर रहे हैं तो वर्टिकल ही ऑपोजिट लगा रहे हैं। तो हाँ इसका प्रिसेशन जो होगा वो इधर को जो आ रही थी टॉर्क लगने से वेस्ट की तरफ आता है, उसको वेस्ट की मूवमेंट रुक जाएगी है कि नहीं थोड़ी? यस सर। क्योंकि लिक्विड जल्दी जल्दी नहीं पास हो रहा है तो टॉर्क लग करके जल्दी से नहीं जाएगा। अगर लिक्विड खोल देते पूरा तो यूं प्रोसेस करता, एकदम जल्दी से भागता। लेकिन जब हमने टाइट कर दिया थोड़ा तो प्रिसेशन ऐसे हो गई, यानी कंट्रोल प्रिसेशन। क्यों? क्योंकि हम एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं बाई बस वही कंट्रोलिंग द बोर ऑफ द ट्यूब। सर। ठीक है। यस सर। So we are now going to take a look at the slides for completing this topic. This is what it is. Damping. There are two types: damping in tilt, damping in azimuth. The definition we have seen: application of horizontal torque, vertical torque, which results in precession in horizontal or vertical planes. How it is done? One, damping in tilt by placing a small weight, damping weight on top of the rotor casing, little offset. And damping in azimuth is done by controlling the Bore of the tube. liquid flow. liquid flow, controlling the liquid flow or bore of the connecting tube, which is doing control of the liquid flow only. However, just for one line you should know कि अब ये सब यूज नहीं होता है, डैम्पिंग इलेक्ट्रिकल हो गई। जब थोड़ा सा तिरछा होता है तो एक स्प्रिंग खींचता है, उस स्प्रिंग के खींचने से सिग्नल मिलती है कि कितना आपको टॉर्क लगाना है। एक मोटर थोड़ी सी घूमती है और उस मोटर से ही ये सब होता है। तो ये सब पुराना स्टाइल था थोड़ा, अभी ज्यादा स्मार्ट सिस्टम्स हो गए हैं, मोर एडवांस्ड हो गए हैं। बट दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। सर वो जो आप वेट बता रहे थे, डैम्पिंग वेट, लगता है तो इसमें यही होगा जो बोर है तो इस डायग्राम में।
These are two different things. What is this? Dampening and tilt. So these things, what are you looking at? ये क्या है? Damping The weight. control weight. Control weight. control weight sir. Damping weight. Not control weight. Not control weight. It is the damping weight. This is the damping weight. You are looking at it like this. It is in the center or away from the center. Away from the center, sir. Away from the center towards the west. Toward the west. Now this is this view. Where are you seeing? On the spin axis. On the spin Right, axis. But actually it is not on the spin axis. It is on the west side. ये पीछे की तरफ है. ये इधर की तरफ है. This is how you are seeing it. And this is how you are looking at it here. So top view, side view, no, front view and side view. Understood? Yes, sir. And this what you are looking at? Damping Sir, weight. damping in azimuth. By The Controlling the flow controlling the of the liquid. flow of the liquid. Is it clear? मुझे लगा Yes, कि sir. जो आपके बात से लगा कि कंफ्यूजन हो रहा था इसके और इसके बीच में, इसलिए I have made side by side as you understand what is damping in tilt and what is damping in azimuth, how it is done. This is the spin axis, this is the spin axis, and the spin axis here is like this. Is it clear? Anyone still having some doubt? Anyone? Or is it clear now? Any doubts still? क्या हो गया? सर ये हो गया damping सर tilt. समझ आ गया एक सेकंड कोई कुछ Liquid. पूछ रहा है, हाँ बोलो. सर डैम्पिंग टिल्ट में ये अपना लिक्विड बैलिस्टिक वाला वो नहीं लेंगे क्या? जरूर देंगे, वो लगा हुआ है. इट इज अंडरस्टूड कि लिक्विड बैलिस्टिक्स यहाँ पे होगी, लिक्विड बैलिस्टिक्स यहाँ पे होगा. लिक्विड बैलिस्टिक्स एक पीछे की तरफ होगा, एक सामने की तरफ होगा, इधर और पीछे, एक बोर्ड के सामने एक बोर्ड के पीछे. क्योंकि ये तो चल ही रहा था, इसमें वेट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई, ये वाली वेट लगा सकते हैं. अगर ये वाली वेट है तो ये नहीं होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा, ये तो रहेगी ही रहेगी. दिस इज फॉर व्हाट? और कंट्रोलिंग रोलिंग. This is for what? PD. Controlling the This is Damping. what? For PD. This is for what? Control precision. PC. Still Yes, sir. some doubt? Or is it clear? No, sir. Yes. Yes, sir. Clear? Good. So what is the result when we have already damped? अगर डैम्प हमने कर दिया एक gyro compass को, so what is the result? We know if this is the horizon, this is the meridian, then it will settle down like this. Then axis will Correct? point through north. Yes, sir. Damping in azimuth और damping in tilt, दोनों का असर ये होगा कि they will settle like this.
Yes, sir. दोनों का Yes, रिजल्ट sir. एक ही होना चाहिए. So when the gyro compass is damped in tilt or when it is damped in azimuth, तो रिमेंबर कि ये चॉइस जो होती है वो मैन्युफैक्चरर करता है कि मुझको क्या बनाना है. ये टॉप हेवी बनाएगा तो इसके साथ डैम्पिंग इन टिल्ट लगेगी. ये बॉटम हेवी बनाएगा तो इसके साथ डैम्पिंग इन एजिमथ लगता है. तो ये डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट कि क्या चीज बनने वाली है. हम आप चेंज नहीं करते हैं. वी आर जस्ट स्टडिंग द बिहेवियर. Once it is made, once the device is made, either damped in tilt, damped in azimuth, top heavy or bottom heavy, then it should settle down pointing to north and horizontal. It should point to north and remain horizontal. But actual settling does not happen like this. This is the case only on equator. कि horizontal भी है और pointing to north भी है. ये सिर्फ इक्वेटर पे होता है. So if we take this as equator, this as north hemisphere and this as south hemisphere, that means latitude is increasing. Latitude is increasing, southerly latitude. The ship may be sailing in this place, may be sailing in this place, doing whatever heading, no problem. It can go some this heading also, no problem. So the ship may be sailing in north or south hemisphere, or it may be sailing on equator. अलग अलग जगह जाती है जहाज. तो स्पिन एक्सिस जो है वो सेटल करता है हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटिंग टू मेरिडियन with zero error like this. But when the ship is going up in the northern hemisphere, it is settling not here, it is settling here. That means above the ground, positive tilt के साथ. And it is also having an error in the azimuth, which is not meridian but meridian से दूर होके सेटल होता है. और ऊपर जाएंगे तो ये और दूर होके सेटल होएगा और ऊपर होके सेटल होएगा. और लैटिट्यूड जाएगी और दूर होएगा और टिल्ट भी होएगी. If the ship is going to the southern part, the spin axis will settle down somewhere here. Azimuth error and tilting downwards below the horizon. ये इक्वेटर है, horizon भी है. और लैटिट्यूड जाएंगे नीचे तो और थोड़ा सा दूर azimuth error will be created. और लैटिट्यूड में नीचे जाएंगे और क्रिएट होएगा. ये azimuth error भी बढ़ेगा, मेरिडियन से दूर भी हो रहा है और डिप भी हो रहा है नीचे की तरफ. So what are we saying? We are talking about settling of the compass. The settling of the compass when it is damped in tilt is happening like this. That means this bit is the error or not. अगर मान लीजिए 40 डिग्री साउथ पे चल रहा है, 40 डिग्री नॉर्थ पे चल रहा है और यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ये आपका gyro compass, not pointing to meridian but pointing like this, little above and to the east. So is this error or not? Error है sir.
एरर है। ये क्यों बढ़ रहा है? व्हाट इट इज इंक्रीजिंग विथ? लैटिट्यूड। Latitude. When latitude is 0, then there is no error. No error. Only when the latitude increases that there is error. जैसे थोड़ा तो थोड़ा, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है ये एरर भी बढ़ती जाती है। So this error is which kind? Is it not easterly error? Yes. Yes. This one is westerly error. Yeah. The tilting here is positive above the horizon. ये ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, यहाँ पे नीचे की तरफ करता है पॉइंट। Yes. तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, the settling curve that we see is like this. So what we are saying that a gyro compass damped in tilt has got an azimuth error which is easterly in which hemisphere? Northern North. hemisphere. North. And there is westerly Westerly error and the southern in southern hemisphere. south hemisphere. This azimuth error is given by sine azimuth is equal to k tan latitude, lambda for latitude. Sine of this azimuth error is equal to k tan lat, where k is a constant. K is known as damping factor. Or eccentricity of ellipse. एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या? तो जो हम डैम्पिंग वेट लगा रहे थे इसके ऊपर में, अगर इसको ज्यादा कर दिया तो ज्यादा टॉर्क लगेगा या नहीं? जैसे टिल्टिंग होगी, वेट अगर हेवी होगा तो ज्यादा टॉर्क लगेगा या नहीं? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस। सर ये वेट का बताइएगा एक बार। ये this is the azimuth error due to latitude. Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. This error, how much of error will be depending on the latitude, tan of the latitude? Yes, sir. Yes, sir. But there is a constant also. वो constant क्या है? It is due to this damping. ये K जो है वो इसकी वजह से है। अगर यहाँ नहीं होता तो damping लगती क्या? नहीं लगता। No, sir. तो इसका मतलब ये कि छोटा वेट लगाया तो थोड़ा डैम्पिंग लगेगा, बड़ा वेट लगाया तो ज्यादा डैम्पिंग लगेगा, और बड़ा लगाया तो और डैम्पिंग लगेगा। करेक्ट? नहीं होता है तो नहीं लगता है, तो लगता है ऑफ कोर्स। तो हाउ मच इज वेट इज प्लेस्ड हियर, दैट विल डिसाइड कि हाउ मच ऑफ डैम्पिंग प्रिसिशन विल बी क्रिएटेड। Yes. Yes, sir. So this decides the K. The damping weight Sir, but ये decides the K. तो That is, हाँ बोलिए। ये तो सर इस हिसाब से प्लेस होता होगा ना कि अपना जो स्पिन एक्सिस है वो नॉर्थ में अलाइन हो जाए, ये डैम्पिंग वेट से। डैम्पिंग वेट से
आगे आएगा भी, लेकिन जब आप इक्वेटर पे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा. इट इज हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटिंग टू नॉर्थ, यू आर माई नॉर्थ. बट जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं आगे, वो यहाँ सेटल होता है, मेरिडियन से दूर हो गया, यस हॉरिजॉन से ऊपर हो गया. यस यस सर. तो ये नॉर्थ में हो रहा है. जब जहाज वापस जाएगी इक्वेटर की तरफ तो ये ऐसा हो जाएगा. फिर से क्या हो गया, इक्वेटर पे Zero correction. horizontal and pointing to meridian, Pointing to no north. error. When we go to south, it is settling down like this, gone below the horizon. यस सर And azimuth error, West. west. Again we go to the equator, it is again here, it is varying. जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होती है वैसे वैसे ये एरर भी चेंज होता है. What we are going to say, that this is because of latitude it is happening. There is an azimuth error which is happening in the case of damping and tilt compasses. Remember this. In damping and tilt compass, a compass which is damped in tilt, there is latitude error which is happening. When on equator there is no error, but as we go up in the north or go as down in the south, the compass is not pointing to true north, it is having error. What kind of error in north? ईस्टर्ली Easterly. And in south? वेस्टर्ली Westerly. Easterly, sir. तो अगर आप 40 डिग्री नॉर्थ में चल रहे हैं तो आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी एरर कैलकुलेट करेंगे उससे आपको पता करना होगा कि अच्छा जो कंपास बता रहा है इसमें ईस्टर्ली एरर है, वो नॉर्थ की तरफ नहीं बता रहा है, वो शिफ्टेड टू ईस्ट है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. We will understand it more. We will understand it more in the last class that we have after lunch. So थैंक यू now we have overshot the time. 4 minute, Thank you, 5 sir. minutes हो गया. So we'll meet in the next class. We'll talk about errors. Thank you, sir. We'll talk about this errors and then Thank you, chapters sir. will be. Sir. Thank you, sir. बाय सर Okay, sir. Bye bye. Sir. Signing off. Signing off, Signing sir. off. Okay, sir. Lunch